Today I will make DIY coffee and cocoa hair dye mask. So keep watching my video. And in this video I will show you how to make cocoa and coffee hair dye to dye naturally your hair at harsh chemicals hair dye यूज़ करने से बाल डैमेज और रफ हो जाते हैं, बालों की रूट्स वीक हो जाती हैं जिससे हेयर फॉल स्टार्ट होती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप नेचुरल हेयर डाई यूज़ करेंगे तो आपके बाल सेफ रहेंगे और हेयर्स डैमेज होने से सेफ रहेंगे। एंड इट्स ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी इजी टू मेक इट एट होम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नेचुरल ब्राउन कलर हेयर डाई बनाने के लिए पहले 1 कप हॉट वाटर लेंगे। Add 2 tablespoon coffee powder or 2 sachets of coffee. Now mix well. अगर आपको थिक पेस्ट बनाना है तो आप हाफ कप कोको पाउडर ऐड करें, और अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे के लिए आपको 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करना होगा। एंड आई मेक it for spray, that's why I use 2 tablespoon cocoa powder, but I recommend to make thick why because it is good और आपको लगाने में भी इसको आसानी होगी अगर आप इस thick paste बनाएंगे। Now I will add hair conditioner and you can take any hair conditioner, 2 tablespoon. Now mix well with this. So my natural hair dye is ready and I convert in this bottle spray, and you can also convert this in spray bottle, but I recommend that you can make a paste जो कि आप इसको easy apply कर सकते हैं। So apply this DIY hair mask for at least 40 minutes and you will get instant results, and then rinse after 40 minutes and you can see the result. This is instant result, and अगर आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए so apply this mask 3 times in a month, but 1 time के बाद से ही you can see the result. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।